Hello everyone and welcome to OPSC study. Today is 15th February and we will deal with all the important current affairs along with previous year question paper related to the relevant current affairs. ଆଜିର କାଲି ଆମେ MSP ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ ଆଉ I had told you that I'm not giving you all the informations related to MSP but we will discuss everything related to it. And today keeping that promise, I will discuss everything related to MSP from a mains as well as prelims point of view. So context kono? Context here the recent farmers protest that is going on in Delhi and around. Reason kono? They are asking for legal backing for minimum support price. Okay, last year and last year also the similar outcry was held around Haryana and Delhi border जोटा कि फार्म लॉ को रिपील करबा पई गवर्नमेंट करिथिले बट एबे पुनी स्टार्ट हला. सो लेट अस सी आम पई जोटा एग्जाम रिलेवेंट सेटा ही इंपोर्टेंट. एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस केबे टू स्टार्ट हला 1965 66 रे स्टार्ट हला. एमएसपी काहे की दिया हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस at which government purchases it from farmers. The price at which government is purchasing the crops, the cultivated crops from the farmer is called minimum support price. आइटा कहीं की दिया हुए for incentivize करिवा पाई incentivizing farmers for cultivating certain crops, right? So first the MSP declare कर दिया. For example paddy पाई वा wheat पाई गोटे certain amount declare कर दिला कि per quintal we will pay 1750 rupees this sowing season, kharif or rabi whatever. The farmers will get encouraged to cultivate that crop, and the cost of cultivation has to be hedged or has to be secured so that the farmers will be encouraged to cultivate that crop. सेथि पई minimum support price declare करा हुए गवर्नमेंट तरफ रु 1965-66 रे एटा आरंभ होइतिला. एई प्राइस रे गवर्नमेंट कोन करे अमाउंट माने जेते प्रति सोइंग सीजन पूर्वरु से डिक्लेयर करे कि मु एते क्विंटल या एते टन एथर प्रोक्योर करिवु ए स्टेट रु एते करिवि तो सेही रेट रे से एमएसपी रेट रे से प्रोक्योर करे. तार केते थाए 1.1 और 1.5 टाइम्स थाए 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हाटएवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेही बेसिस रे से माने तार 1.5 गुना देई कि प्रोक्योर करंती एमएसपी. Yesterday I told you that there are 23 crops on which the MSP declared. Let us see कि just to give you an idea जे MSP खरीफ crop पाई किछि अछि, रबी पाई अछि, okay, and some commercial crops are there. What are they? See, you don't have to remember all this crop name. I'm just giving you an idea as to what the crops are there. Like paddy, ज्वार, बाजरा, रागी, maize, all this. एटा कोन cereals crop रे cereals रे सब अछि. pulses रे आपनकर आसीगला एटा अरहर आसीगला, मूंग, उड़द, हां कमर्शियल रे कॉटन आसीगला. तापरे एटी आसीगला ग्राउंड नट्स, ऑयल सीड्स आसीगला, ग्राउंड नट्स, सनफ्लावर, सोयाबीन, सेसमी, नाइजर सीड. तापरे रबी सीजन पई व्हीट, बार्ली, ग्राम. माने आमे कोन करथिले जे काली जो देखुथिले चारटा जिनस देखिथिले एमएसपी को नेकी. गोटे होची सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स. एटा को देखिथिले बेसिकली एथरे से सब ना दिया हिची. हमकु से सब मन रखिबार नै, खाली एटा जानिबार अछि जे चारटा एरिया रे एमएसपी दिया होची. 23 टा क्रॉप एथरे होउछंती कवर. सो एटा तो गला गोटे सेक्शन. Let us move to the next section. The objective कोन MSP रो objective कोन गोटे तो आमे देखिले जे फार्मर्स मानको इंसेंटिवाइज करिवा पई क्रॉप प्रोडक्शन पई
तो से दैट विल आल्सो रिलेटेड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप इफ यू वांट जेमती आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान रे आमे चाहू जे ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाइबा पई आमे एमएसपी दे देले ऑयल सीड रे लोक इंसेंटिवाइज हेले तो लेट अस cultivate oil seed. If you want saffron to be cultivated, if you want maize to be cultivated in some areas, then you can give MSP in that area on that crop, and the farmers will get incentivized and encouraged to cultivate that crop. So the objectives of this MSP is to ensure food security in the country, protection of price drop to the farmers, for the farmers, and incentivize desirable क्रॉप प्रोडक्शन एटा तीनटा गोटे ऑब्जेक्टिव रे आउरी भी बहुत ऑब्जेक्टिव हेई पारे फूड सिक्योरिटी केमती होबो the more you will produce the more food secure you are, you don't have to import, and you have ample amount of buffer stock in your hand to run all kind of welfare programs such as PDS or national nutrition mission or midday meal scheme, whatever. So people will be food secured if you are giving MSP to the farmers. Farmers will cultivate more and more of that food. Second is the protection to farmers from price drop. सी डिमांड सप्लाई रो आम इकोनॉमिक्स रे देखिजे जेते बेले कोनोसी भी जिंस मार्केट को बहुत बेसी अमाउंट रे सप्लाई हो जाए ता प्राइस ड्रॉप हो जाए एबे जदी सुगर गोटे किलो मार्केट रे अछि आ 100 जण किनिबा पई अछंती ताहले तार रेट केते थिवो ऑब्वियसली किलो 100 ही पारे 200 ही पारे 500 ही पारे किंतु जदी सुगर एबे 500 केजी मार्केट को आसी गला किनिबा पई 100 जण अछंती तो व्हाई शुड दे पे 100 और 200 रुपीस definitely the price will drop to 10 rupees 15 rupees 20 rupees so whenever there is a harvesting season for any crop at that time the market is flooded with that crop जेमती पेडी रो टाइम आसी गला हार्वेस्ट गला बहुत पेडी आसी गला सुगर रो हार्वेस्ट सुगर कैन हार्वेस्ट हला बहुत सुगर आसी गला तो से टाइम रे कोन हुए प्राइस ड्रॉप हो जाए जदि प्राइस ड्रॉप हो गला then the cost that has been incurred by the farmers how will he get the return for that this MSP is being actually in MSP is being provided to the farmers आउ जो डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन कथा कहली सरकार को जोटा जेमती आमे 1966 रे फ्रूट क्राइसिस एंड ऑल से एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रिवोल्यूशन जो हितला कोन होतिला से टाइम रे जे वी वर not able to produce enough food for our farmers so this MSP was actually brought into action ki jo thre ki people will get incentivized and they will be encouraged to produce certain crops so desirable crop production pai price stability एवं price drop ru बंचेबा pai एवं food security पर objective को नै की MSP होची okay what are the benefits of this MSP first the hedge माने गोटे risk free hedge against price volatility so if price drops at any point of time then the farmers at least have that assurance from the government that we will get 1.5 times of our cost of cultivation so it is a kind of risk free from the price volatility second is surety of minimum price at least they will get a certain price so you have that mindset in ki jaha bhi hi jao bhai मु तो रिस्क फ्री अच्छी आ सेटा कल्टीवेशन करिवा पे डेफिनेटली एनकरेज करे नेक्स्ट फूड सिक्योरिटी एटा सब बेले आसीबो जा हेले भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जेमती प्रथम रो कहली व्हाट एबे धरंतु आमे चाहिबा कि ओडिसा रे भाई कॉटन रो प्रोडक्शन बेसी होनी आमे चाहू छे ओडिसा रे कॉटन रो प्रोडक्शन तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कला जे ओडिसा स्टेट रे कॉटन जे प्रोड्यूस करिवो ताकू मिनिमम जति की तार कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तार 2 टाइम्स मु देबी सो पीपल दोज हु आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग पैडी और व्हीट इन आवर स्टेट दे विल डेफिनेटली जंप टू कॉटन बिकॉज़ देयर इज बेटर इंसेंटिव सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हे परिबो okay then the government can run this nutrition programs such as ICDS midday meal scheme hela targeted public distribution system जो रहू छे हमर PDS चावल वगैरह तो से सब जिंस गुडा को MSP द्वारा ही परिबो but there are certain limitations related to this MSP let us see what are this you don't have to worry I will give you PDF of this this MSP wala part okay so don't worry मेंस पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है फार्मर मानकर श्योर क्वेश्चन अच्छे जेहेतु एबे तो रिसेंटली पूरा बवाल चली एमएसपी को नहीं की
तो बहुत इम्पोर्टेंस ये बहन करे. So that's why I'm covering from a comprehensive 360 degree point of view. So there are certain limitations related to MSP, that it lacks the legal guarantee for which the farmers are protesting actually. This legal guarantee कोउथि पई बार बार आमे सुनुछि legal guarantee नाही, माने कोन होछि MSP तो डिक्लेयर कर देले सरकार, किए करूछंती CACP डिसाइड करे हला. CACP जो ऑर्गेनाइजेशन है सीट मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर से एग्रीकल्चरल फार्मर वेलफेयर अंडर ये अच्छी CACP. एटा कमिशन फॉर एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एमती किछि यार फुल फॉर्म. तो CACP से डिसाइड कर दिए कि हम आमे एते टन एठू नेबू सेते टन सेठू प्रोक्योर करबू, किंतु 85% रु बेसी जो प्रोक्योर हुए सेटा हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान रे हुए, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला भलिया स्टेट रे जेतिकी डिक्लेयर कर रहे थे तार जस्ट 1% ही प्रोक्योर करा हुए. तो फार्मर एबे कोन करबो, से मार्केट को जीवो, कारण गवर्नमेंट प्रोक्योर करूनी ना. अब मार्केट रे ट्रेडर विल नॉट पे देम द फेयर अमाउंट. So this is the problem that they are asking for this legal guarantees. MSP should be a legal right for us. If you not procure your promised amount, then we can go to the court. So the first limitation on the MSP is that there is lack of legal guarantee. Second, the issue with the cost of production, and that deals with the MS Swaminathan formula of A2 plus FL plus C2, to which we will come later, okay, after dealing with this. So let us keep this in mind. The cost of production is not fairly actually calculated. Third point is the lack of effective data. We don't have the data related to how many farmers are cultivating, how much amount is being cultivated, and how much should we procure. दिल्ली रो ऑफिस रे बसी की जने डिसाइड कर देबो जे केते कोठी हमें प्रोक्योर करबा, सेतरे हुए नी. ग्राउंड रियलिटी को देखिवा को पड़े. तो सही जिंस को जे वी लैक इफेक्टिव डेटा रिलेटिंग टू द फार्म प्रोडक्शन. Coverage is not effective. There is regional imbalance. The balance is the scheme is more inclined towards the northern states of India, highly unequal across states. So this point is actually complementing to this point. The states जोटा मु कहली जे 85% of the procurement जोटा होची सेटा northern states गुडा करे होची, जबकि southern state रे एटा 1% 2% एमती रही जाउची. तो रीजनल इम्बैलेंस रोची जोति पई स्टेट्स आर खफा होचंती. हाईली अनइक्वल अक्रॉस स्टेट्स, एटा सेम पॉइंट ये रिपीट हो जाइछि. एंड लैक ऑफ अवेयरनेस. गाँ मानकरे कोन हुए, जो लोकल ट्रेडर्स माने आसंती से माने आसिकी फार्मर्स मानकू ठू धान या गहम जहाँ भी हो सेठू नै कि 1750 यदि MSP रेट अच्छी, दे विल पे 1200 1000. तो पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट MSP इज एंड ऑल. तो सेटा होची यार लिमिटेशंस गुडा को. हाउएवर let us see what will be the benefits of the legal backing, and I am attaching this from today's newspaper The Hindu रो आजिर न्यूज़पेपर रे एटा जोटा गोटे क्रिसिल रो रिपोर्ट रे एटा आसीतिला. तो लीगल बैकिंग देले कोन कोन हेई पारे पॉजिटिव जोति पई चली छि हमरो प्रोटेस्ट. ओके, MSP लीगलाइज हे जिवो ताहले से माने क्लेम करिवे एज अ राइट. ठीक अछि, से माने किए फार्मर्स माने MSP को गोटे राइट हिसाब रे एबे कोन व्हिम्स एंड फैंसीज गवर्नमेंट रो तार निजर प्रेरोगेटिव हिसाब रे चलछि जे मोर जेमती इच्छा मु सेति की प्रोक्योर करिवि. बट फार्मर्स आर actually asking for a statutory backing, that there should be a law that such and such amount will be procured, and once we give the notification, then we will definitely procure it whatsoever may be the condition. तो ए जिनसटा नाही. तो ए जिनस हे जिवो बेनिफिट कोन हबो, लीगल बैकिंग हेले गोटे राइट हिसाब रे ताकू क्लेम करा जाई परिबो. इंप्रूव्ड प्राइस रियलाइजेशन. तो एबे जेमती आमे कहले कि को लोकल ट्रेडर्स को से तांकर कल्टिवेटेड क्रॉप दे दोचंती, सेडा होबोनी, कारण नाउ द मार्केट विल आल्सो the private sector will also be obliged to procure more than the MSP amount. तो प्राइस रियलाइजेशन डेफिनेटली होबो. ई केस रे डाइवर्सिफिकेशन होबो, जो भी क्रॉप को से माने नोटिफाई कर देले एबे फार्मर जानला मु तो डेफिनेटली पाइबी,
तो से कहीं डाइवर्सिफाई करबोनी ता क्रॉप को ऑयल सीड रे जदी ताको बेसी पैसा मिलची ही विल स्विच टू ऑयल सीड तो एथरे कोन हबो जति की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हबो सेटा एग्रो क्लाइमेटिक जोन हिसाब रे हबो जोथि पई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कराबा फॉर एग्जांपल धरंतु मध्य प्रदेश रो नॉर्दर्न साइड रे किबा विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र रे वाटर स्कार्सिटी अछि वेरे सिटी एमएसपी पई लोक प्रोड्यूस करूचंती कोन पेडी प्रोड्यूस करूचंती माने धान गहम ए सब करूचंती पानी कोठु आनिबे बोरवेल खोलिबे बोरवेल खोलले सेटा अनसस्टेनेबल वे ऑफ प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी एते यूज होउची किंतु जदि ऑयल सीड्स रे जदि दिया पल्सेस रे दिया होची सेटा कोन ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप तांको बेसी पानी रो दरकार नै तो सेही स्टेट गुडा करे क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर हे परिबो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हे परिबो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्स एंड मिलेट्स बाय लीगलाइज गिविंग अ लीगल बैकिंग टू दिस सिस्टम अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिसिल रो गोटे रिपोर्ट आछि आजी से कहूची जे एमएसपी कौन कौन सब बेनिफिट दबो फार्मर्स मानकू एटा क्रॉप रो जो इम्बैलेंस होची एबे जो कथा कहली ए क्रॉप रो इम्बैलेंस को से एड्रेस करिवो हला तापरे कैश सपोर्ट दबो फार्मर्स मानकू व्हेन प्राइसेस प्लमेट बिलो एमएसपी मार्केट प्राइस रे जदी गोटे फार्मर जाउची आ ताकू से प्राइस मिलुनी तार कल्टीवेशन तो ऑब्वियसली ता पाखरे गोटे बैकअप अछि जे मु एटलीस्ट सरकार को दे परिबी आ सरकार डेफिनेटली परचेज करिवो कारण सेटा लीगली गारंटी करा हिची ताको ओके या परे कोन कहला इट विल आल्सो गिव फार्मर्स फ्रीडम टू सो क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस नॉट बेस्ड ऑन चॉइस ऑफ कोनोसी ट्रेडर या मार्केट डिमांड हिसाब रे से करिवोनी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हेबोनी तार जो चॉइस तार जो सॉइल टाइप से जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन रे अछि तार रेनफॉल पैटर्न कोन सेडा देखि कि से ता चॉइस रे से करि परिबो ओके बेस्ड ऑन देयर लोकल कंडीशन तापरे गोटे जिंस क्रिसिल से कहूची जे माने एटा से सजेशन देला भलिया करूची जे ओनली दोस क्रॉप हुज मंडी प्राइस आर लोअर देन एमएसपी सेही क्रॉप को गवर्नमेंट प्रोक्योर करबा कथा बोली से गोटे दउची जदी लीगल बैकिंग दिया हुए एनीवे बट देयर आर सर्टेन आमे देखिबा कोनोसी भी इश्यू को एम्ति ही हैंडल करबा तार बेनिफिट्स प्रोस कॉन्स लीगल इश्यूज ओके सो लीगल इश्यू रो बेनिफिट पढी देले एबे लीगल बैकिंग हेले प्रॉब्लम कोन सेटा देखिबा सब्सिडी बढ़ी जीवो ऑब्वियसली तमे एबे गोटे राइट हिसाब रे जदी दोउछ देन यू आर बाउंड टू प्रोक्योर दैट मच अमाउंट इवन इफ यू डोंट नीड दैट तार रिजल्ट कोन हबो जे दिस वन इनइफेक्टिव ग्रेन मैनेजमेंट एबे तो बफर स्टॉक केते जेति की थिबा कथा ताथु बेसी अछि तो ग्रेन मैनेजमेंट ही परिबोनी ग्रेन मैनेजमेंट माने कोन मु एबे 2 बस्ता 5 बस्ता 10 बस्ता धर की गली किंतु सब गोडाउन फिल अछि फिलअप हेकी अछि सरकारी गोडाउन गुडा मंडी गुडा तो एबे सरकार रखिबो कोठी से जिंस जदि बाहर रखिला वर्षा होबो खराब होबो आसी की मूसा खाई जिवे आउ कोनोसी पशु पक्षी जानवर ये से खाई जिवे से ग्रेन रो मैनेजमेंट केम करिवो केमती आ जेति की दरकार नाही ताटू बेसी से प्रोक्योर करिवो तो ऑब्वियसली द सब्सिडी विल इंक्रीज एंड दैट विल लीड टू द मार्केट डिस्टॉर्शन बिकॉज इफ the farmers will not get the enough amount then they will go to मंडी एंड प्राइवेट सेक्टर विल फेस द प्रॉब्लम एटा तो आमे देखिले ता पूर्वरु गोटे क्वेश्चन एटा अछि यूपीएससी 2020 दिस वे वी विल डील आवर करंट अफेयर हैंसफोर्थ एज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आमे जो भी करंट अफेयर करूचे सेटा हमर सिलेबस को नै की करा होची एवं प्रीवियस ईयर रे ई सब टाइप रो क्वेश्चन आसी छी बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू व्हाट दिस स्वामीनाथन कमिशन रो कोन कोहा हिची एमएसपी को नै की फर्स्ट होची सेंटर फिक्स करे एमएसपी खरीफ रबी क्रॉपिंग सीजन पई रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी जहा से डिसाइड करे सेही बेसिस रे गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिए सोइंग माने बुनिबा पूर्वरु व्हेन फार्मर ग्रोस ए क्रॉप ही इनकर कॉस्ट some of it explicit some of it implicit or unpaid CACP consider करे ई सब को किछिटा जोटा देखा जाय जे हां एटा खर्च होची किछिटा देखा जाय नै तो A2 + FL + C2 रो फार्मूला देथिले A2
प्लस एफएल प्लस C2 रो फॉर्मूला देथिले किए स्वामीनाथन वर्तमान जोटा पेमेंट होची A2 प्लस एफएल बेसिस रे होची स्वामीनाथन कहूची C2 को भी तमे ऐड करो A2 कोन A2 जेति की भी डायरेक्ट एक्सपेंस होची जेमती सीट से चारा किनिला जो सार यूज कला केमिकल्स यूज हर्बिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स तापरे लेबर को सी हायर करूची धान काटिबा पई बुणीबा पई ट्रैक्टर चलला सेथरे जो फ्यूल यूज हैला इरिगेशन पई जो से जल कर देला से सब को ऐड करिकी A2 रो वैल्यू आसे एफएल माने कोन जो फार्म लेबरर अनपेड फैमिली लेबर माने बहुत सारा जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से माने तो लेबर हायर करि पारंतिनी तांको घरे जदी 5 जण अछंती 5 जण जाईकी काम करंती बट दे आर नॉट गेट पेड बिकॉज़ दैट इज देयर फैमिली बिजनेस तो से माने किंतु तार तो वैल्यू अछि ना से लेबर रो सो एई एफएल को फैमिली लेबर को भी एठी ऐड करा हुए एवं हायर लेवल को एई A2 रे ऐड करा हुए ठीक अछि जो लेबर मानो को तमे हायर कोन की आनिचो तांको जो पेमेंट करूचो सेटा A2 रे आसे बट फैमिली लेबर जोटा पे हुए नी सेटा एफएल रे आसी जे अब वर्तमान एमएसपी एथि रे दिया होची स्वामीनाथन कहउचंती C2 कथा जे along with A2 plus FL revenues foregone on owned land that is rent and fixed capital asset the interest जहाँ भी लैंड अच्छी से लैंड रो गोटे वैल्यू अच्छी तो से लैंड रो वैल्यू रेंट हिसाब रे तो पेमेंट हवा कथा ना तो तार भी प्राइस मिसिबा कथा एवं जो फिक्स्ड कैपिटल एसेट जेमती ट्रैक्टर हैला थ्रेशर हैला XYZ जहाँ भी हैला तार गोटे इंटरेस्ट अच्छी कैपिटल एसेट रो गोटे इंटरेस्ट थाए जोटा कि से यूज करे सपोज मु गोटे फार्मर मोर ट्रैक्टर अच्छी मु मो ट्रैक्टर को यूज कली मु जदि अन्य कौन सी ट्रैक्टर आनी थांती ताहले मु ताकू पेमेंट करि थांती किंतु मो ट्रैक्टर यूज कली तारो भी तो किछि भी से कैपिटल एसेट रो किछि इंटरेस्ट अछि ना तो मते सेटा पेमेंट भी हेबा कथा बोली से C2 को कहउचंती किंतु गवर्नमेंट बे जाय फार्मूला को आसीनी एनीवे आमे बहुत एथरे आगो को बढ़ी गलेनी लेट अस डू वन क्वेश्चन फ्रॉम 2020 रो UPSC क्वेश्चन एटा प्रथम स्टेटमेंट in the case of all cereals pulses and oil seeds the procurement at minimum support price MSP is unlimited in any state and UT of India. Second statement in the case of cereals and pulses MSP is fixed in any state and UT at a level to which market price will never rise. दीटा स्टेटमेंट देला प्रथम स्टेटमेंट कहूची जे MSP अनलिमिटेड हला प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड हबो बोली कहूची अरे अनलिमिटेड नहीं सी गोटे अमाउंट जाहि तांकर जो डिक्लेयर थाए सेति की ही करबो अनलिमिटेड हबोनी सो ए स्टेटमेंट भूल ही गला सेकेंडली कहूची जे मार्केट प्राइस एमएसपी रु अधिका बढ़ी पारिबो नाही एटा कहूची किंतु एमएसपी रो फुल फॉर्म कहूची जे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम अमाउंट तो ता ऊपर जेति की गले तो सेति की भलो फार्मर को भी भलो देश को भी भलो तो एटा भी रॉन्ग तो आंसर कोन नाइदर वन नॉर टू ओके एथरे देखंतु ओनली खाली कांसेप्ट पचारिछि एमएसपी रो आपण जदी एमएसपी रो कांसेप्ट बुझी चंती आपण यार आंसर करि परिबे फैक्ट्स ऊपर एटा बेस्ड नो एनीवे लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ या ऊपर आमे तीनटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिबा यूपीआई को नेकी करंट न्यूज पर्सपेक्टिव रो एति की इंपोर्टेंट जे श्रीलंका एवं मॉरिशियस एटा OUS हबो एटा US हबो श्रीलंका एवं मॉरिशियस रे वर्तमान यूपीआई सर्विसेज को एक्टिव करि दिया गला यूपीआई माने कोन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सरल भाषा रे कहले आमे जो भीम ऐप फोन पे पेटीएम ए सब यूज करी कि जो पेमेंट करूचे इंस्टेंट पेमेंट करूचे सेटा होची यूपीआई कोन यूपीआई रो डेफिनेशन देन रियल टाइम पेमेंट रियल टाइम माने जो टाइम रे कोले सही टाइम रे का सब किछि होबो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इन इंडिया दैट अलाउस यूजर टू ट्रांसफर मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स ओके दीटा बैंक रो अकाउंट भितरे जो पेमेंट होची सेटा यूपीआई बेस्ड पेमेंट एटा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 रे 7 अंडर रे एटा को आरबीआई रेगुलेट करे यूपीआई को UPI is regulated by Reserve Bank of India based on Payment and Settlement Act 2007.
एटा केबे डेवलप होइतिला 2016 रे हितिला नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया याकू डेवलप करिथिला आ एनपीसीआई एटा एटा जो बना हिची कहारो कहारो कोलिशन रे आरबीआई एवं आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ए दी जण मिसी की एनपीसीआई को बनेछंती तो ये ही सब रेगुलेट करे या रिलेटेड जहां भी क्वेश्चन असी या जहां भी ଆମର whatever the conceptual part is there we will deal with it later. The grow initiative, it is a greening and restoration of wasteland with agroforestry grow initiative. Okay, this initiative is by Niti Aayog, please note it down. Niti Aayog এটা बहुत टाइम पचारे जे के या को नोडल एजेंसी एंड ऑल. So this grow initiative greening and restoration of wastelands, so it is environment related with agroforestry. What is agroforestry? And along with agriculture you are also concerned about the forestry part. So in a patch of farmland you are growing trees also, so agroforestry इटा हुए या फिर plantation crop जो को encourage करा हुए ताकि agroforestry को हुए to promote environmental conservation and sustainable land use in India. As simple as that, agroforestry covers 8.65% of India's land and grow, that is greening and restoration of wasteland with agroforestry aims to this convert this underutilized especially wasteland into productive agroforestry zone. एथिरे बुझेबा और किछि नाही बोधे कारण यार डेफिनेशन ही कहि देला हमकु मने रखिबार अछि जे ग्रो इनिशिएटिव टा नीति आयोग द्वारा जो भी वेस्टलैंड अछि ताकू एग्रोफॉरेस्ट्री रे कन्वर्ट करिबा एवं हमर जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बूस्ट दबा. ठीक अछि, एटा होला ग्रो इनिशिएटिव. नाउ आ गोटे एनवायरनमेंट रिलेटेड जीबीएफएफ बोली एटा गोटे आसीथिला ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड. सो एथिरे जणा गोडी होला जे दिस इज अ फंड. ओके, कौन होता जे कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क एटा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रे एटा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रे एटा डिसाइड करा हितला जे एमती गोटे फ्रेमवर्क हमें करबा कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जो थ्री कि हमें फंडिंग को बूस्ट करबा आ से फंडिंग बूस्ट होबा द्वारा कोन हबो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी को एनकरेज करा जीवो. तो एटा होची अच्छा तो ए जो हितला केएमजीबीएफ से केएमजीबीएफ को जो फंड माने जो पैसा एथिरे प्रॉमिस करा हितला सेथि पई ए जीबीएफएफ बना हिची ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड. ओके, अच्छा, see who will be the trustee of this fund? There should be someone who can take care of this fund. So World Bank which are a trustee. COP 15, let us do something related to this KMGBF. Conference of Party 15 Montreal under UN Convention of Biological Diversity set 23 targets to be achieved by 2030. ये जो KMGBF कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फंड एटा 15 नंबर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रे एटा डिसाइड करा हितला आमे ए केएमजीबीएफ बनेबा आ एथिरे 23 टा टारगेट नि हितला जोटा कि 2030 जे हमकु पूरा करिवार अछि. फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स आर लाइक कंजर्विंग 30% ऑफ द लैंड एंड सी, इन्वेसिव स्पीसीज जो थांती तांकु 50% रिडक्शन करिबा एवं $200 बिलियन पर ईयर आमे ताकू वी विल जनरेट $200 बिलियन पर ईयर एटा प्रॉमिस करा हितला ए केएमजीबीएफ रे. तो ए जो फंड टाकू नै कि कोठी रखिबे एठी रखिबे जीबीएफएफ ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जोटा कि वर्ल्ड बैंक एज अ ट्रस्टी ताकू मैनेज करिवो. सो दिस इज अ सिंपल गोटे ऑर्गेनाइजेशन विषय रे आमे पढुचे. अच्छा, आपन को मु कहली यूपीआई विषय रे देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस एंड वी विल डील विथ एवरीथिंग जोटा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसीची. विथ रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2018 रे आस्तला. भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन with UPI enabled bank account.
Second statement, while cheap pin-based credit card has 4 factors of authentication, Bhim app has only 2 factor of authentication. देखो first statement तो by default right. Bhim app ये फोन पे जहाँ भी ये पेमेंट एप्लीकेशन माने अच्छी माने बैंक UPI enabled bank account अच्छी माने you can transfer the fund. So this statement is correct. While this statement is wrong. Cheap जो Bhim app has only 2 factors of authentication, এটা wrong. এটা actually 3 factors of authentication. अच्छा, factors of authentication. Let us understand what is the factor of authentication is. जेमती आपण भीम ऐप खोलुचंती कि पेटीएम की जहाँ भी करुचंती, फर्स्ट फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन कौन जे आपण गोटे मोबाइल नंबर सांगरे ताकि लिंक करुचंती. यू शुड हैव अ मोबाइल फोन और मोबाइल नंबर टू लिंक योर एप्लीकेशन. सेकंड कौन हो जे यू आर गिविंग योर बैंक अकाउंट डिटेल्स देयर. जेमती आपण आपनकर डेबिट कार्ड रो नंबर देले, सीवीवी देले, एक्सपायरी डेट देले एवं आपण जनरेट कले. दिस इज सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन. थर्ड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन इज पिन. यू नीड टू जनरेट अ पिन. आज से पिन देला परे तापरे जाकी. सो देयर आर 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन इन केस ऑफ भीम ऐप टू रन अ भीम ऐप. वेयर इज ये जो चीप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन कहूची ना 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन न था. एटा 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन था जे यू नीड अ डेबिट कार्ड एंड चीप ए सब थिबो आ एटीएम रे आपण पसेबे आ सेतिरे आपनकर पिन देबे. सो एटा स्टेटमेंट भूल हे जाउची. तो आंसर होची 1. सेकंड यूपीआई रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन आस्तला 2017 रे. क्वेश्चन कोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द यूपीआई. सी एटा एथरे किछि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से पचारुनी, से पचारुछि आपनकर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट. डिजिटल करेंसी विल टोटली रिलैप्स. ए स्टेटमेंट भूल हे गला. डिजिटल करेंसी माने कोन, क्रिप्टो जो करेंसी गुडा को एथरनेट क्रिप्टो अछि सेटा को पूरा पूरी रिप्लेस कर दबो यूपीआई कहछि ना. सेमती तो हुए नहीं. एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज. एटा माने ऑफशॉर्ट स्टेटमेंट गोटे. यूपीआई रे एफडीआई सांगरे कौन तार मतलब अच्छी. डीबीटी जो सब्सिडी वगैरह विल वेरी इफेक्टिव. जदियो एटा यूपीआई और बाकी सब जिनस द्वारा हुए किंतु एटा गोटे डायरेक्ट आंसर भलिया स्टेटमेंट लागुनी. तो एटा ही तार करेक्ट आंसर हो. मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट बिकॉज बैंक अकाउंट माने ही लिंक हो जिवे. तो मोबाइल वॉलेट रे जाई कि आपन को पेमेंट करबा दरकार पड़िबो नाही. अच्छा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन देखो एनपीसीआई को लेकिन पुणी 2017 रे पुणी गोटे क्वेश्चन पचार जे एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री. दैट्स करेक्ट बिकॉज जेति कि आपनकर एते ऑनलाइन पेमेंट द्वारा समस्त बैंकिंग सेक्टर संगे इंक्लूड हे गले. एंड एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपे कार्ड पेमेंट स्कीम. यस, दिस इज आल्सो करेक्ट. सो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो आमे देखंतु यूपीआई को नहीं कि एते सारा क्वेश्चन आसी किंतु माने या तो आमे से सब पढ़ुना या ताकू आमे इग्नोर कर दोची या अननेसेसरी जिंस सब पढ़ी कि आमे टाइम वेस्ट करूछ. तो हमरो करंट अफेयर पूरा रिलेवेंट रहिबो. आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ दिस today's current affair. I hope this current affair is helping you a lot. Please give us feedback if we can improve in certain other ways, or if we can inculcate some other thing to it, or we need to reduce this lecture timing माने जेति कि बेस जदि लंबा ही जाउची. और so this is all for today. Thank you very much. See you later.